अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन डिमांड और व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। There are many economic, social and political factors. I will write economic, social and political factors that are responsible as the determinants of demand. जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करते हैं, पहला जो फैक्टर है इट इज़ इकोनॉमिक, दूसरा जो फैक्टर है इट इज़ सोशल, तीसरा जो फैक्टर है इट इज़ पॉलिटिकल फैक्टर। जहाँ तक इस इकोनॉमिक फैक्टर्स का ताल्लुक है, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जो डिटरमाइन करते हैं, जो डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, दैट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है among the determinants of demand is the price of the commodity. We have seen when we studied demand, there is an inverse relationship between the price of the commodity and its demand. When the price of the commodity, when there is a change in the price of the commodity, delta P, when there is a change in the price of the commodity, it influences the demand inversely. Suppose change in price is either there is an increase in price or there is a decrease in the prices. There is a decrease in the price. By change in price we mean either rise in price or a change in price or a fall in price. As the price of the commodity changes, it causes an inverse change in the demand of the commodity. When the price changes, it causes an inverse change in the demand of a commodity. For example, when prices rise, what we see on demand contracts. And when prices fall, there is extension in demand or demand extends. Therefore, the prices have a direct impact on demand. Price of the commodity is the most determinant as far as the demand of the commodity is concerned. This is first factor. Now we will go to price of related goods. This is first price of the commodity. This has a direct impact on the demand of the commodity. As I told you, the second factor that is accepted as the determinant of demand is the price of the related goods. This is the second factor. Price of the related goods. Demand for commodity
demand for a commodity is also influenced by the price of the related goods. Related goods जो हैं इससे डिमांड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. What do we mean by related goods? These goods are of two types. Related goods जो हैं they are of two types. One, substitute goods, and complementary goods. सबस्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम एक्सचेंज के जो हम एक की जगह दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी. These are substitute goods. If the price of the tea rises, people can go to the consumption of coffee. If the price of the coffee rises, people can substitute it by demanding tea. When the price of the tea rises, automatically its demand falls. What will happen? The people will consume coffee. Or if the price of the coffee rises, people will shift to the consumption of tea. This is substitute good. What do we mean by complementary good? Complementary goods are demanded jointly. Complementary goods are those goods which are demanded jointly. Complementary goods are those goods which are demanded jointly. For example, petrol, car and petrol. Car and petrol. This is a complementary good. Suppose if the price of the car rises, if the price of the car rises, it will influence directly. If the price of the car rises, its demand will contract. Its demand will contract. When its demand will contract, it will influence the price of the petrol. So we see that the second important determinant of demand is price of the related goods. Number third, income of the consumer. The third important factor that is known as the determinant of demand is the income of the consumer. Third, income of the consumer. We see that there is a direct relationship between the income of the consumer and the demand. There is a direct relationship between the income of the consumer and the demand. As the income of the consumer increases, जब इनकम इस कंज्यूमर की इंक्रीज होती है उस वक्त डिमांड पे क्या असर पड़ता है? What is the effect of the increase in the income of the consumer to the demand of the consumer? We see that when the income of the consumer increases, the demand for normal goods जो है उस टाइम राइज होती है. When the income of the consumer increases, the demand for normal goods rises. I will write, when the income of the consumer
increases demand for normal goods rises. And falls with a fall in the prices. So this is the income of the consumer. This is the third determinant of demand. It has a high impact on the demand. Now we will come to fourth factor. These are tastes and preferences. Tastes and preferences of the consumer. Tastes and preferences of the consumer also influence what we call as demand to a greater extent. These tastes and preferences include fashion, habitus, customs, climate, ये सारा आएगा इसमें, एडवर्टाइजमेंट्स, न्यू इन्वेंशंस आएगा इसमें, तो ये सारी चीजें जो हैं ये डिमांड पे असरअंदाज होती हैं. फैशन, अगर कोई कमोडिटी आउट ऑफ फैशन हो अगर उसका प्राइस कम भी होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की लोग कोशिश नहीं करेंगे. हैबिट, अगर खुदा न खास किसी का मतलब हैबिट होगा वो स्मोकिंग करता होगा या लीपर का इस्तेमाल करता होगा, वो अगर ये हैबिट जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. तो लोगों की जो आदत होती है, आदत से मजबूर होकर वो इस कमोडिटी को कंज्यूम कर देते हैं, चाहे वो हेल्थ के लिए ठीक हो या ना हो. तीसरा, कस्टमर्स जो हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं एज द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. देन देयर इज क्लाइमेट टू हैज एन इफेक्ट and creates a healthy effect on the determinant of demand. Advertisements, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये भी अपना एक काम करते हैं एज डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. लोग एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं. एंड न्यू इन्वेंशंस आर देयर, जब न्यू इन्वेंशंस आती है मार्केट में तो उसका असर भी डिमांड पे पड़ जाता है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा माइल होते हैं. तो दीज आर टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस. सो टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस आर कंसिडर्ड टू बी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एज वेल. देन देयर इज गवर्नमेंट पॉलिसी. This is the fifth factor, government policy. Government policy जो है it is also responsible to influence the demand of a commodity. Government policy is also responsible to influence the demand of a commodity. For example, the government imposes taxes. I will write the government imposes taxes.
on various commodities. Which leads to an increase in the price of the commodity. Which leads to an increase in the price of a commodity. As a result, demand goes down there. गवर्नमेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है इम्पोज कर देता है टैक्सेस ऑन वेरियस कमोडिटीज. सो व्हेन जब इम्पोज होते हैं टैक्सेस तो प्राइसेस का क्या हाल होता है, विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इंक्रीज प्राइस जो है व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस. एज ए रिजल्ट उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो डिमांड है इट गोज डाउन. So this is another determinant of demand. Now comes the population growth, another factor. Population growth. Perhaps sixth. The growth of population is another factor that is responsible as a determinant of demand. Population जितनी बढ़ेगी उसका डायरेक्ट असर जो है वो डिमांड पे पड़ेगा. So these are the various determinants of demand. इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम कास्ट्स पे जाएंगे. जो दूसरा क्लास होगा इंशाल्लाह वो थ्योरी ऑफ कास्ट्स के बारे में होगा. तब तक ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.